Hello everyone, hope you are doing great. So now we'll be beginning with the first video of blood physiology, which will be about the introduction to blood physiology. What can the questions be asked? Okay, so the questions that can be asked is the normal range of each of the blood cells can be asked. Then various components of blood like plasma and the various cells, how much percentage of blood do they occupy? Okay, so these are the questions that can be asked. See, mainly this is an introductory video. Okay, so beginning the video, I'm gonna ask you a question. Ki, what do you think? How much percentage of your body weight will the blood occupy? Ki jiske bina no body cell can survive. Okay, so how much do you think? So it is only about 8% of your body weight that blood occupies. Okay, and this MCQ can be asked. Okay, then we'll go into the definition of blood. So blood is made up of two components. Blood is made up of fluid and the other component is cells. Okay, so blood is made up of a protein rich fluid called plasma, and cells may RBC, WBCs and platelets. Okay, so when asked about the definition of blood, you can write that blood is made up of plasma, RBC, WBC and platelets. These cells can also be called as formed elements. How much percentage of the blood is plasma? So it is 55% of the blood. And how much percentage of blood are the formed elements? These are 45% of your blood. Okay, अब तक blood का definition से we've understood. Now blood को outside the body, how will you separate the blood? Okay, so for separating the blood you need an anticoagulant tube, because see, inside the body blood is having natural anticoagulants which are preventing it from coagulation, but as soon as you take it from outside the body, so for separating we need to do it in an anticoagulant tube like EDTA or heparin. So hence we'll need an anticoagulant tube for the separation of blood. See, basically clotting mein calcium plays a major role. So EDTA वगैरह, they will chelate with calcium. Okay, not allowing the blood to clot. इसमें centrifuge tube में you will put this tube and then you will see that the various components are separated. So these will be separated according to their density, right? So RBCs, these are the heaviest. Okay, so they'll be at the bottom and plasma will be at the top. But blood was made up of plasma, RBC, WBC, platelets. So plasma is done, RBC is done. So where are WBCs and platelets? So you can see this whitish thing, this buffy coat. This buffy coat will be having your WBCs plus platelets. Buffy coat is a very thin layer. Why it is a thin layer? Because in comparison to the RBCs, उनकी quantity is very less, WBCs and platelets की. So buffy coat will have WBCs plus platelets, and see, it is occupying approximately less than 1% of the total blood volume. And another thing which I want you to pay attention to is कि LE cells in SLE. SLE is systemic lupus erythematosus. So it is an autoimmune disorder. So LE cells, see, WBCs are basically made up of neutrophil, lymphocyte, monocyte, okay, eosinophils and basophils. Okay, so उनमें से कोई एक सेल है LE cell. LE cell are basically your neutrophils. So this question can be asked कि MCQ में suppose, वैसे तो it is not asked, but it can be asked कि which cells may be found in the buffy coat. So LE cells in SLE. You know this all regarding the buffy coat, I will elaborate more in my WBC के video में. Okay, so for now just remember कि buffy coat is made up of WBCs and platelets. Then blood was made up of plasma, RBC, WBC, platelets. Plasma again is made up of ions, organic molecules and inorganic molecules. Okay, so for now just remember this, because next video is going to be about plasma, right? Then
Then this is a very important statement from Ganong. ऐसा you may ignore it, but it is having a very good correlation with your 11th-12th की physics. Okay, so this statement says that the resistance to the flow depends to a minor degree on the viscosity of the blood, but mostly on the diameter of the vessels. Okay, so what is it saying? That ki resistance to the flow will depend to a minor degree on the viscosity of the blood. Okay, but mostly on the diameter of the vessel. So if you remember your Poiseuille का formula, कि resistance is equal to 8 eta L by pi r raised to 4. The small r is your radius. So what you can see, कि resistance is depending on radius raised to 4, okay? Whereas eta, which is your viscosity, उस पे तो it is dependent to the power 1 only. But radius पे it is dependent to the power 4. So the resistance to the flow will depend to a minor degree on the viscosity of the blood, but mostly on the diameter of the vessels. Viscosity मतलब it is the resistance to the flow. Viscosity is basically कितना thick है blood, ठीक है? तो resistance thickness of the blood पे इतना it does not depend. It will mainly depend on the vessel का radius, okay? So next functions of blood. See, functions of blood तो major तुमको याद ही रहता कि respiratory function, transport function, excretory, the functions of blood. So functions of blood में major तो you remember. Now the yellow highlighted ones are something which are different that maybe तुमको नहीं समझाओ. So oncotic pressure पे भी blood will help. So oncotic pressure very in depth you will understand in plasma protein next video में, because albumin will help in the retention of water in the blood. Okay, so albumin अगर कम रहा है तो फिर edema हो सकता है. Then another is temperature regulation. Suppose hot weather है, right? So hot weather है, so you don't want heat inside your body as well. तो heat का loss करने के लिए the blood will vasodilation will occur and blood तुम्हारे surface की तरफ आएगा, so that heat loss हो. And in cold temperatures you want the heat to be restored in your body, so vasoconstriction will occur and the blood will not majorly flow in your surface. Okay, temperature regulation. Then hemostasis मतलब preventing excess loss of blood. Okay, वो उसमें भी blood plays a major role. Then H plus OH minus balance. See, blood में blood का pH is around 7.35 to 7.45, but blood में various acids may be flowing, right? So वो pH को they do not disturb the pH. इसके लिए the blood is having various buffers which can be your bicarbonate buffers or even hemoglobin. Okay, so they will help in the maintenance of the pH of the blood. Okay, so वही functions है, just go through it once. कलर देता है, right? हीमोग्लोबिन से न्यूट्रिटिव फंक्शंस है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है क्योंकि स्टोरेज, इम्यूनिटी इज ड्यू टू योर WBCs, राइट? देन ये तो समझा, ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शन है, फ्लो ऑफ ब्लड टू द किडनीज एंड ऑल्सो लॉस इन द फॉर्म फ्रॉम द स्किन ऑल्सो. देन टेम्परेचर रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट मीडियम, रेस्पिरेटरी फंक्शन, ऑक्सीजन CO2 को कैरी करता है, राइट? सो फंक्शंस ऑफ ब्लड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू बी रिमेंबर्ड, राइट? ओके, सो अब तक व्हाट ऑल वी हैव डन, यू आर डन विद ब्लड का डेफिनेशन. बफी कोट यू नो द फंक्शंस ऑफ ब्लड, एंड ये तो बस एक ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट था 11th-12th से याद दिलाने के लिए. एंड हाँ, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओके, कि सबकी नॉर्मल वैल्यूज यू शुड रिमेंबर, तो मोर बेटर तुमको समझेगा इन द अपकमिंग वीडियोज व्हेन यू विल स्पेसिफिकली स्टडी दैट सेल. ओके, बट इसमें भी इंट्रो है. तो टोटल WBCs 4,000 to 11,000, रिमेंबर. देन
WBCs में you will be having neutrophil, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil. So how do you remember is NLMEB. MEB. So N is सबसे maximum and basophil is सबसे minimum. So neutrophils is 3000 to 6000. Then what? Lymphocyte. So 1500 to 4000. Then monocyte 300 to 600. Eosinophil 150 to 300 and basophil is 0 to 100. Then our erythrocytes, which are your RBCs. So males में 5.4 million, females में around 4.8 million. Platelets will be around 2 lakh to 5 lakh. Okay. So we are done with the normal values as well. Okay, so yeah, I was reading water homeostasis को as hemostasis, but blood का दोनों में भी रोल होता है. Okay, so hemostasis भी करता है blood and water homeostasis भी करता है. Now next I want you to pay attention is how do we measure red cell volume and plasma volume. Okay, so ये दो aspects we'll see. So red cell volume, what does this mean? Does this mean कि single red cell का volume? No, it means कि पूरे body में there are how many red cells, उनका volume. Okay, so it is of all the red cells present in your body. And okay, so there are two methods by which you can calculate. एक है कि total blood volume में से you subtract plasma का volume, which will give you red cell volume. So plasma volume तो you will learn कि how we will do. Total blood volume के लिए you will require a term called hematocrit. So वो RBC के वीडियो में you will get. But total blood volume में सिर्फ minus plasma volume क्यों कर रहे हैं? Because WBCs and platelets are less than 1% of the total blood volume. So they don't have a significant effect इतना. The second method which you can do is injecting tagged RBCs. Okay. So first I want you to think of an example. कि ink. Okay. So ink को ink you are putting it in a mug. Okay. Mug में कितना water है you don't know. Suppose bucket. Okay. Bucket we'll assume. So bucket में कितना water है, total water you don't know. And you're putting ink जिसका amount you know. Okay. So bucket में जो total water है, you need to correlate it with total RBCs. Okay. So bucket में जो total volume है water का वो तुमको नहीं पता है, but those are your RBCs. Okay. Total RBCs जो blood में है, I want you to correlate ऐसा. And जो ink है, that you correlate with tagged RBCs. Okay. What did I say कि ink is your tagged RBC and bucket में जो volume of water है वो तुम्हारे total RBCs है. Okay. Basically वो तुम्हारा red cell volume है, total RBC का volume है. So अब ये what are the steps followed? सबसे पहले you will collect वो person का blood. Okay. अब blood में plasma भी रहेगा, right? But तुमको red cell volume you have to identify. So you need to separate. तो separate कैसे कर सकते हो? You will use this anticoagulant tube. So some amount of RBCs you have got. RBC को separate किया. RBC को then you will tag with chromium is most commonly used because it is radioactive. Okay. So chromium जाके RBCs को bind करेगा. So this quantity कि कितने RBC का volume लिया है that you know. So tagged RBC का volume you are knowing, which is in relation to your ink. Okay. So ink का volume पता है. Now you will put that again in person को person के अंदर you will inject it and you will give it some time. Okay, to mix throughout the body. So ink को डाला. So ink को you have given time कि bucket में पूरा वो mix हो जाए. अभी तुमको calculate करना है total. So what you can do, तुमको रेडियो एक्टिविटी पर ml अगर मिल गई, तुमको इंक का वॉल्यूम पर ml मिल जाएगा ना. अभी 1 ml वाटर यू कलेक्ट फ्रॉम द बकेट एंड तुमको थोड़ा सा तो वट एवर शेड यू गेट
उसके कोरिलेशन में यू कैन से कि कितना वॉल्यूम होगा टोटल वाटर का, राइट। अगर सपोज बकेट और मग है और बकेट में तुमको बहुत डाइल्यूटेड दिखेगा, मतलब पर ml ऑफ वाटर में इंक का क्वांटिटी विल बी लेस, सो वाटर का वॉल्यूम इज़ मोर। ये हो गया बकेट के केस में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। होप यू आर गेटिंग इट। सो वैसे ही यू विल डू इन द केस ऑफ ब्लड ऑल्सो। ब्लड लिया, फिर से इंजेक्ट किया, इट विल सर्कुलेट इन द बॉडी एंड देन अगेन यू विल टेक आउट द ब्लड। अभी तो रैंडम ब्लड आया, मतलब पूरा ब्लड में वो रेडियो एक्टिव RBCs हैव मिक्सड। नाउ वट एवर अमाउंट ऑफ ब्लड यू विल गेट, वो पर ml उसमें यू विल सी द रेडियो एक्टिविटी। तुमने टोटल कितनी रेडियो एक्टिविटी इंजेक्ट की थी, सपोज 5 माइक्रो क्यूरीज, ओके, ये यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। एंड रेडियो एक्टिविटी पर ml ऑफ ब्लड तुमको कितनी मिली, सपोज 0.5 माइक्रो क्यूरीज पर ml मिली। सो 10 ml है टोटल रेड सेल वॉल्यूम। दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, इतना कम वॉल्यूम थोड़ी होगा। ओके, सो टोटल रेड सेल वॉल्यूम मिल गया तुमको 10 ml। सो रेडियो एक्टिविटी पर ml ऑफ ब्लड you will get it when you will remove the blood again, okay, hope you have got it. And then is plasma volume. अब plasma volume how do you measure? plasma volume के लिए you don't remove the blood पहले and then you separate, ऐसा। plasma volume में what the benefit is कि we have a dye which is Evans blue dye, so which will only bind to plasma का प्रोटीन्स। हम ऐसा डाई वी कैनॉट इंजेक्ट जो कि जाके RBC WBC प्लेटलेट सबको बाइंड कर देगा। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे समझेगा? प्लाज्मा वॉल्यूम के लिए वी नीड अ डाई विच विल ओनली बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। सो इवांस ब्लू इज द डाई, इट विल ओनली बाइंड टू एल्ब्यूमिन and albumin does not mix with other like it won't flow from the capillaries to other interstitial spaces इतना फास्ट, ओके। इट विल रिक्वायर टाइम, बट उसके पहले सी, सो यू हैव इंजेक्टेड इवांस ब्लू डाई एंड यू हैव गिवन सम टाइम फॉर इट टू स्प्रेड इन द बॉडी। सो यू नो द अमाउंट ऑफ डाई नाउ, वो स्प्रेड हो गया प्लाज्मा में, इट इज़ बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। देन यू रिमूव द ब्लड, यू डू द सैम्पलिंग एंड देन अगेन पर ml तुमको समझेगा कि कितना डाई इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, एंड फिर वही सिमिलर सेम फार्मूला से यू कैन गेट द total plasma volume, okay. So the thing to remember is इतना डेप्थ में नहीं होता है, बट क्योंकि now we are doing specific topic, so I thought कि better है to go in depth. So red cell volume, plasma volume. red cell volume में what do we mainly use is we do radioactivity पे based chromium you will inject, okay, tagged RBCs, the principle. And plasma volume के लिए what you do, you inject a dye called Evans blue. So hope you have got it. Now another term which is present is effective blood volume. Now see, effective blood volume is the volume of blood which is actually circulating in the body, okay, which is really circulating. Some amount of blood is actually stored in your veins and spleen वगैरह areas में, so वो उनका कुछ रोल नहीं है सर्कुलेशन में। सो इफेक्टिव ब्लड जो है वो एक्चुअली तो जो सर्कुलेट हो रहा है दैट इज द इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम। सो इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम इज टोटल ब्लड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जैसे दैट इज विच इज़ नॉट फ्लोइंग ऑल्सो, टोटल ब्लड वॉल्यूम में वो भी आता है, माइनस द वॉल्यूम दैट इज सिक्वेस्टर्ड, मतलब वॉल्यूम दैट इज प्रेजेंट इन द स्प्लीन एंड वेन्स में विच इज़ नॉट फ्लोइंग, ओके। देन आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में viscosity, specific gravity, and another property which you can write is the pH of blood, okay. So pH of blood is around 7.35 to 7.45, slightly alkaline. And viscosity of blood, viscosity मतलब basically it is the thickness of blood, okay, मतलब वो कितना रेजिस्ट कर रहा है फ्लो को। विस्कोसिटी ज़्यादा सो वो फ्लो नहीं होना चाहेगा, राइट। सो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज़ 4 to 5 times ऑफ वाटर ड्यू टू सेल्स एंड प्रोटीन्स वगैरह। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब कि डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सो वाटर का तो इट इज़ 1, नो, सो डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.050, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो स्लाइटली more than water, okay. So we are done with blood. Short में I will revise. ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यू शुड रिमेंबर। बफी कोट में क्या क्या रहता है? WBC प्लेटलेट्स। ब्लड के फंक्शंस तो इट इज़ वेरी इजी,
बफी कोड थोड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड दीज वैल्यूज टोटल WBCs 4,000 to 11,000, neutrophil 3,000 to 6,000, lymphocyte 1,500 to 4,000, then monocyte 300 to 600, eosinophil 150 to 300, basophil 0 to 100. Then your RBCs in male is 5.4 million and females में it is 4.8 million. Platelets 2 lakhs to 5 lakhs. बस mainly values are important. And ये effective blood volume भी kind of. And rest तो इतना नहीं. pH of blood you should remember. बस इतना is required. Okay, so yeah, thanks for watching. And if you really did understand, so like, share and subscribe.